We'll first see decimal expansion of rational numbers. Okay, more than copying the problems, try to see what is the catch in every problem. So I start with decimal expansion. We'll see one or two examples out here. Decimal expansion, and you are seeing decimal expansion of what? We'll try to cover a lot of topics. Practice आपको घर पे बहुत करना है. We are seeing decimal expansion of rational numbers. Now decimal expansion of rational numbers can give you two ways. One is it can either terminate and it may non-terminate. And if it doesn't terminate, then it will be रिपीटिंग. नहीं, इरेशनल का तो सवाल ही नहीं, हम तो इसमें रैशनल नंबर्स का देख रहे हैं. रैशनल नंबर्स आर irrationals will have non-terminating, non-repeating. So in the case of, when we are seeing it in the case of what you call rational numbers, we will have the numbers, they will either terminate or they will non-terminate. And if they do not terminate, then the decimals will be repeating. अब सवाल आता है जब हमें क्वेश्चंस करने देते हैं कि हमें कहां तक, हाउ डू वी गेट टू नो कि कहां तक कोई नंबर रिपीट करेगा. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल फर्स्ट वेयर वी ट्राई टू सी termination case. Termination is very easy. Let's take a rational number. Say I take a rational number in the form of 1/5, and I told you, whether it's in your syllabus or not, termination happens when denominator, you can keep this as a check, when the denominator will usually can be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Now look at this particular number 1/5. क्या मैं 1/5 को ऐसे लिख सकता हूं? 1 by 2 to the power 0 into 5 to the power 1. What is 2 to the power 0? 1. 5 to the power 1 is 1. तो ये टर्मिनेट करेगा. ऐसे भी हमें बताइए ये टर्मिनेट कर ही जाएगा. Let's say I take a number which is 2/8. 2/8 को करने की कोशिश कर रहे हैं. 2/8 is how much? 1/4. 1/4 also terminates. अगर इसी को ऐसे ही करने की कोशिश करें, then how will you see? 2 ऐसे लिख के इसको आप 8 से डिवाइड करोगे. आता है तो डिवीजन. Do you know decimal division or not? So since it doesn't go, so what we do, we put a point, so it becomes 20. Then 8 2s are 16. What is the remainder? 4. Now since there is a decimal, you have the right to get a 0. So you put a 0 out here. 5. Then 8 5s are 40. So here our remainder is 0. So these were the classic examples of termination. So whether if you get a termination question as an MCQ, what check should you apply? Whatever denominator you have got, you should make the denominator in the form of 2 to the power m. जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको. से हमारे पास एक नंबर है 2/7, and the question asked is, will it terminate or will it not terminate? Can anyone answer my question? Will it terminate or will it not terminate? Then I'll understand you have understood what I'm teaching. Otherwise, why will it not terminate? Answer is, again you all are speaking wrong English. 7 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n. करके देखो तो. Can 7 be expressed? सोचो, just सोचो. यही तो बता रहा है ना, आप लोग खाली कॉपी करते हो. 7 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 and 7. So 7's factors are 1 and 7. Okay, 1 we can write as 2 to the power 0. But what about 7? We can't express it as 5 to the power something. So ये जो हमारा what you call division है, ये आगे जाके क्या हो जाएगा? ये terminate नहीं करेगा. If I give you an example like this, say 4/6. Tell me, will 4/6 terminate? No. No. What are the factors of 6? 6 factors are 2 and 3. You can express 2 as 2 to the power 1. How do you take care of 3? You cannot. Have you understood what I am trying to teach? I think, Bakul, your camera is switching on and switching off. If you think your whatever, stay in one way. Do you understand what I am trying to say? Have you understood the trick or not? Don't be hell bent on that this is in my
NCERT, this is not there. This is something which helps your mathematics to be faster. A rational number terminates when its denominator can be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. This means if the denominator has factors like 3, 7, 11, 13, then not exactly odd, primes, if you see, they're all primes. 17, 19, these will never terminate. Now try to see your NCERT book. All the examples given were divided by 7. The non-terminating examples that are there in your NCERT, that's how you learn maths. The NCERT examples for the non-terminating numbers are all divided by 7. They did not give any number which is divided by 5, divided by 4. Let's say divided by 4, will it terminate? Yes. 4's factor is only 2. 2 can be expressed as 2 into 5 to the power n. Divided by 6, no, 6 will give rise to a 3. It will never terminate. Divided by 5, yes. Divided by 10, yes. Divided by 8, 8 is again 2 cube. Yes. Because 0 हम ऐसे भी पैदा कर सकते हैं. Anything to the power 0 is 1. It's not 0, sorry. 1 हम ऐसे भी पैदा कर सकते हैं. Have all of you understood this trick? Looking at a number, you can say whether that number decimal will terminate. अब जैसे आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया. Say somebody gives you a question like this. Say for example, आपको किसी ने दिया 257 divided by 17 और आपको पूछ रहा है will this terminate or not? Looking at it, you say it will not terminate because the denominator cannot be. Huh? It will. If it is a multiple, it will. I don't know. If it is a multiple, it will. So let's change it. I didn't check that. If it is a multiple, it will. So let's just change it. Let's make it 258 divided by 17. Now, I don't think so. It will not terminate. Clear? तो ये वाला portion clear हुआ आपको? This part, is it clear with you now? Our main job will be on this part. Grade 9, we will do problems on this part. Can I rub this portion and start working on this particular portion, repeat and non-repeat? Okay, in repeat and non-repeat, what we are trying to say, the numbers will be repeating. यहाँ पे एक shorthand formula याद रखिए. If you get a rational number in the form of 1 upon n, and this means you are trying to check for the numbers which will not terminate but will repeat. Means I'm trying to do a test in which I'm trying to check for a number which will not terminate and will repeat. हमारे अंदर कभी-कभी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी तक रिपीटिंग टेंडेंसी दिख ही नहीं रहा है. कितना तक करूं मैं? हम थक जाते हैं ना. Sometimes, like say for example, a number 10 divided by 3, it will repeat immediately 3.3333. ये repeat करना शुरू कर देता है. But there are some numbers, like say if I ask you 22 upon 7, ठीक है ना? इसको कीजिए. So here we will find that at what level will this repetition stop? There is a trick to it. ऐसे नंबर को आप हमेशा ऐसे लिखिए 22 multiplied by 1 upon 7. Try to bring it in this format. 1 upon 7 means 1 upon n. If you get a number which is 1 upon n format, here the repeating blocks will always be n minus 1. Repeating blocks. Yes, Bakul, since you are seated with a computer, can you tell me what is 1 by 7? Can you quickly tell me what is 1 by 7? 1 by 7. Yes. How much is 1 by 0.142857. 0.142857? And then it starts repeating. Then it starts repeating. Then it starts repeating. Mind you what is said. Then it starts repeating. तो इसको repeat कराते हैं. It will be something like 1, 4, 2, 8, okay, 5, 7, and blah blah blah. Just count the number of digits here. 6. What was the denominator? 7. It will always repeat till how much? n minus 1. Iterations में ऐसे ही आएगा. It will always go up till n minus 1. Clear हुआ ये? Have we understood? Or maybe less than that. Or maybe less than that.
For example, this particular problem, how do you do this problem? 10 into 1 upon 3. Vakul, what is 1 upon 3? 0.3333. Okay, so we find that the repetition is happening immediately after 1. So the number of blocks that will repeat, that will always be less than this or equal to n minus 1. Is this clear? ये आप जानने से भी हेल्प होता है, नहीं जानने से क्या होगा, आप ऐसे ही करोगे. Clear? Okay, the number of digits that repeat is known as the period. This is called the period or the periodicity. So 1 by 7, what is the periodicity? 6. 6 is the periodicity. This will be helpful for us when we will express these numbers as rational numbers. 10 by 3, what is the periodicity? Can somebody tell me what is the periodicity here? 1, because only 3. Okay, if I have a number 5.032626 ... what is the periodicity? 2 is the periodicity. The number of digits that keep on repeating, 2 is the periodicity. Have we understood? Any doubts so far? So rational number on division can either terminate or it will not terminate. If it does not terminate, it will always repeat. Question is, how much hard work should I do to find the entire repeating block? The amount of hard work that you need to do to find the entire repeating block depends upon what is the numerator. Either it will be 1 less than the numerator or anything less than the numerator. So let's try some problems now. Okay. So say for example, let's try to divide 11 by 6. 11 by 6. Let's do. 11 by 6 means it should be 11 into 1 by 6. Maximum repetition should be 5 digits. करके देखते हैं. चलो करना शुरू करो तो. Can anyone help me to do 11 divided by 6? 6 1 times is 6. What is the difference? 5. जाता है? No. So what do we do? Since 5 is less, we put a point. This becomes 50. 6 8 times is 48. How much do we get? 2. So another 0. 6 3 is 18. That gives me another 2. Then so the repetition has come. See, so 6 3s are 18. Now it is repeating at this level. So there is no point in going further. I can straight away write that this will now repeat at 1.83. Be very careful where the bar is. Bar should not be on 8 because 8 is not repeating. 3 is repeating. What is the periodicity for this particular division? 1. Anyone, any doubt? Kartika, have you understood what is the periodicity here? Clear? Sir, I have a doubt. Yeah. Since 1.833 bar, 1.83 bar of the same. Not exactly. We do not write 1.833 bar. Bar is always put on the least number of digits that are repeating. So in that case, you should have said, why are we not putting 1.8333 bar? That's meaningless. Since only 3 is repeating, we put the bar on a single 3 itself. The nomenclature is like that. Anyone who has still not understood this part? N minus 1 into 6 minus 1 will be 5. 6 minus 1 will be 5. या तो 5 या उससे कम. अगर ये आपको रुलाता ना ये प्रॉब्लम, जैसे मान लो आपको रिपीटिशन नहीं आ रहा है, तो आपको एक जगह तो होना चाहिए ना, मैं कितना करूं. तो आप याद रखना, मैक्सिमम ये आपको कितना सता सकता है? 5 रिपीटिशन तक ही सताएगा, इससे ज्यादा नहीं सता सकता है. इसलिए अगर आपको एक सताना करना है तो कर लेते हैं ना. आइए 1/7 को कीजिए ना, करो ना. हाँ कर दिया था, पर उसको तो बिना देखो तो बकुल को कैलकुलेटर करवाया था. पर अगर आप 1/7 करोगे तो ये कितना तक ले जाएगा? आपको 6 प्लेसेस तक ले जाएगा. दिस इज द वन व्हिच विल मेक यू क्राई द मोस्ट. सो इन योर एग्जाम now you should think fast. If your ma'am has given you something by 7, please understand, from next time onwards class में हल्ला गुल्ला कम करना है. Literally तुम्हारा मजा ले रहा है. ये this will go till 6 digits. Yeah. 7/7 तो question does not arise ना.
7 by 7 is a terminating decimal. You didn't see what I said. I said this is working for the non-terminating type of decimal 1 by n format. 7 by 7 falls in the first criteria. 7 by 7 is terminates. 7 by 7 is 1. I am saying if the numbers don't terminate, try to bring the number in the format of 1 upon n. In 1 upon n, the maximum iteration you will go is n minus 1. So the punishment was in 7. In 7, we went up till 6 times. But when we did 10 by 3, which is 1 by 3, you should go up till 2 iterations, right? But we found it exactly at first one mein chala gaya. At 2 iterations itself, yeah, it will be always less than that. Yeah, Vakul, any further question? Shall we go ahead now? So our next type of numbers are expressed in decimal form. 1 or 2 I am just doing. Can you just do 3 1 by 8? Okay, let's do it verbally. 3 1 by 8. 3 1 by 8. Nobody touches his or her pen. Just look at my face. 3 1 by 8. 3 ko bhul jao. Just take 1 by 8. You should straight away say it's a terminating decimal. 1 by 8. 8 is what? 2 to the power 3. Is it working? I still feel there is a doubt. You all are not able to catch. Are you able to catch the trick or not? I asked you, can you find the decimal for 3 1 by 8? You forget 3. In your mind, what should you think only? 1 upon 8. Is 1 upon 8 a terminating decimal? 100%. 1 upon 8 can be written as 1 by 2 to the power 3 into 5 to the power 0. So this terminates. And if this terminates, you are just multiplying one natural number with it. This number's multiplication will never change the termination non-termination thing. आप देखो ना, ये कितना हो जाता है 1 upon 8 करेंगे तो कितना आएगा? आओ करके देखो 1 upon 8. So इसमें पॉइंट बिठाया 0 आया, right? So there is a 0. 8 1s are 8. 2 है तो 20. 8 2s are 16. 4 है तो 40. 8 5s are 40. 0.125. 0.125 के साथ आप अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, it is not going to change its terminating or non-terminating nature. So that 3 actually doesn't play any role. For us, if we observe that 1 by n format is sufficient. यही अगर 3 1 by 7 होता तो non-terminating and the 3 would have multiplied. You have a question in NCERT like try to solve 1 by 7. Thereafter predict the values of 2 by 7, 3 by 7. Have my question. So just now Vakul told the value of 1 by, see how should you do? They said solve for 1 by 7 and thereafter predict the values of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7. Very easy. How do I see this number? 2 into 1 by 7. ये part तो अपन पहले ही कर चुके हैं. How do I see this number? 3 into 1 by 7. Repetition same रहेगा. Every number, when it is having a point, these are the point. This is the integral part. Only the integral part will change. The decimal part will keep on the same manner. Have you understood? नहीं समझोगे तो बोलना. Generally in schools you don't expect this type of problems to come in exams from this chapter. Like see, they have said find the decimal expansion of 1 upon 7 and thereby. So let's just see what is 1 upon 7. 1 upon 7 if we try to do, we get a value which is 0.142857 and then we have a bar. Now notice the bar is over the entire 6 digits. So what is the periodicity? 6 digit. इसको आप कैलकुलेटर में करोगे तो अगला नंबर आएगा 143. If you do it in calculator, they will show 143 because they have found that 8 is more than 5. So the calculator shows you a rounded value. Don't get carried on by that. ठीक है? अच्छा. 22 upon 7 closest value to pi. इसको मिक्स फ्रैक्शन करो तो कितना होता है? 7 3s are 21 and 1. पाई का वैल्यू कितना होता है? नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू ऑफ पाई 3.14227. सो दैट आर यू गेटिंग द ट्रिक? ये 3 खाली आके यहां बैठता है. सो लेट्स सी.
Can you predict what should be 2 by 7? What should be 3 by 7? Let's see. 2 by 7. 2 by 7 predict karo. 0.2. नहीं, 0.2 by 7 means you have to multiply. 2 multiplied by 0.142857. You just multiply this and write the value. 3 multiplied by 0.142857 and multiply. Sorry. This is what the book is trying to test from you. Is this clear? ऐसे problem भी आते नहीं है. These problems don't come. The type of problems that you will get, that is going to come now. Okay. So let's start. Express in the form P by Q. Now this is important for your examination point of view, unit test point of view. Express in the form P by Q. What are you trying to express? P by Q is a rational number. So आपको क्या express करने देगा? Whatever will be given will be a rational number, but the form will be non-terminating, repeating. Use your common sense. Only non-terminating repeating numbers are rational numbers. If it is a non-terminating non-repeating, वो question आ ही नहीं सकता है, because a non-terminating non-repeating is what number? Irrational. How can an irrational number be shown as P by Q? Don't gulp the chapter. Enjoy and understand. The question will always tell you express something in the form of P by Q. My question is, what should be that something? That something also has to be P by Q. A human being only can be represented as a human being, ना? अभी आप tortoise को थोड़ी human being बना दोगे, वो तो हो ही नहीं सकता है. So the format here is in the form of rational number. Here rational number will be given to you in what format? Non-terminating repeating or a terminating decimal, or it can be a terminating decimal also. But we can never expect a non-terminating non-repeating decimal out here, क्योंकि वो तो tortoise है. उसको इंसान कैसे बनाओगे आप? पॉसिबल नहीं है. चलें अभी इससे प्रॉब्लम करें. आइए पहला क्वेश्चन करते हैं. let's express 0.3 bar in P by Q format. Steps will be very important. So your question will be express 0.3 bar in P by Q format. So how we do these problems? The first step is you assume let x be equal to 0.3 bar, which is equal to 0.33 ऐसा हमने लिख लिया. And ... Understood? Let x be equal to, तो easy वाला हो गया, थोड़ा tough वाला होना चाहिए था. And now here you can put 3 digits, you can put 4 digits, your choice. That doesn't hamper your calculation. You can put 3, you can put 2, whatever it is. Have you understood? This is, identify this as step number 1. Next we write, then your next step will be multiplying both sides. Multiplying both sides by, now your multiplications will always be 10, 100, 1000. The number of zeros depend upon the periodicity of this particular number. Please understand. Please understand. How many I have shown here? 1, 2, 3. It has no importance. Periodicity कितना है? 1. So take what number you will take? 10. We will be multiplying either with 10 or 100 or 1000. So the number that you pick, the number of zeros should actually tally with the periodicity. So here what is the periodicity? Periodicity is 1. So we will multiply both sides by 10. Do not do the mistake. अभी समझ में आया? इसको 1000 से मत multiply कर देना. इससे कोई मतलब नहीं है. कितने संख्या रिपीट करते हैं उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आइए, इस साइड कितना हो गया बेटा? 10x. और इस साइड कितना हो गया? ये हो गया 3.33 और ये कितना था? 3 था ना, तो 3.33 हो गया हमारा. समझ में आया? और आगे और भी 3 है, तो आप ऐसे भी ले लो 3, कोई टेंशन तो है नहीं ना. एंड दिस इज योर नंबर 2. योर नेक्स्ट स्टेप विल बी subtracting 2, sorry, not 2, छोटा वाला, subtracting 1 from 2. यानी कि क्या करेंगे?
2 minus 1 is what you are going to do. 2 minus 1. तो 2 minus 1 करने की कोशिश करते हैं. Okay, let me make this little bit small so that I am able to write more out here. 2 minus 1 करने की कोशिश करते हैं. Okay, so if you initially, children, don't jump steps out here. If you find that you are not able to do it in this manner, लिख लो 10x is equal to 3.33 dot dot dot. Okay, how many threes I should write? Balance this threes to the number of digits out here. मैंने यहां अगर 2 लिया होता तो यहां भी 2 पे रखेंगे ताकि सुंदर लगे देखने में. 1 की वैल्यू कितनी थी? x. x is equal to how much? 0. How many threes? 3. And children, you have the freedom to change the number of threes so that they just get balanced. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 तो रिपीट कर रहा है ना. अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 10x minus x कितना हो गया बेटा? 9x. और यहां से देखो तो बड़ी मजेदार वाली चीज होगी. What is the मजेदार thing? All these will cancel each other. 3 minus 3 0. 3 minus 3 0. 3 minus 3 0. मतलब इधर शून्य मिला, इधर शून्य, इधर शून्य. लिखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. और यहां पे कितना हो गया? 3 minus 3, 3 minus 0 3. अब हम अगले स्टेप में लिखते हैं x is equal to 3 upon 9, which is equal to 1 upon 3. So this is the p by q format. बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर होगा. All of you try to absorb every step and let me know if there is any doubt in any single step. First thing, whatever number has been given to you, try to identify the number's periodicity, which is very important. Based on that, we will be deciding what is the multiplying factor. If the periodicity was 2, the multiplying factor would be 100. If it is 3, it will be 1000. Sir, why did you write it only 3 decimal and 2 decimal? That is totally up to my desire and pleasure. The way it actually shows me in a beautiful manner to get cancelled with each other. Have we understood this? Shall we try one more problem? चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं. This time we try to do 1.4 bar. 1.4 bar we are trying to express in p by q format. Now children, again see 1.4 कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मतलब ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, कछुआ नहीं देगा आपको. So let's proceed by our steps. Let x be equal to 1.4 bar equal to 1.44 मैंने लिख दिया अभी, मेरी मर्जी. ठीक है? And I am putting this as step number 1. And as a hygiene, look here, children, as a hygiene, what you should do when you write this 1.44, थोड़े दूर में डॉट्स रखिए. जरूरत पड़ा तो यहां एक 4 बिठाएंगे और नहीं पड़ा तो डॉट डाल देंगे. ये तो मेरी एडजस्टमेंट के ऊपर है. राइट. नाउ व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? 1. So with what should I multiply? 10. So we write multiplying both sides by 10. So what does it become? 10x is equal to 14.4. थोड़ा दूर में डॉट 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 रखा मैंने. ठीक है? अब बैलेंस करेंगे दोनों को. इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 है. यहां भी एक बिठा दो भाई साहब, खत्म हो गए, सुंदर हो गया हमारा चीज. अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे 2 minus 1. Sir, how do you know it is 2 minus 1? I will say, you idiot. बड़े से ही तो छोटा माइनस होता है, छोटे से बड़ा थोड़ी माइनस होता है. Understood? So let's do 2 minus 1. So 2 minus 1 means 10x, and write these steps. Baby steps we will do. 14.44 dot. और यहां पे कितना हो गया? x equal to 1.44 dot. Decimal under decimal and align them properly with the minus. इधर हो गया 9x, इधर कितना हुआ? 14 minus 1 is 13. बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं. x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 13/9. आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. अच्छा, अब अपने आप को एक और बेवकूफ सवाल पूछो.
Is 13/9 a terminating decimal? No, sir. 9's factors are always 3, and 3 cannot be expressed as 2 to the power 5. Exactly. That's why this number came as non-terminating repeating. ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हलवा है. खाली आप गाजर हाथ से छीलिए और घी लगा के खुद से गाजर का हलवा बनाइए. The whole Pebble City was dark, but we were in light, you know. लोगों की इतनी ईर्ष्या होती होगी ना जब पावर जाता है. मजा आया? थोड़ा सा और छेड़छाड़ करे. हाँ, आओ एक और करते हैं. वन मोर. अच्छा, इस बार हमारे पास दिया है 0.1234 dot 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 express in P by Q format. Looking at this question itself, I'm starting to smile because they are just making a mockery of it. They could have written 0.9 bar. ये हमें just confuse करने के लिए दिया. So we can write as 0.9 bar. So what is our first step? Let x equal to 0.9 bar, which is equal to 0.9. दो लिख के थोड़ा जगह छोड़ के मैंने डॉट छोड़ दिया ताकि जरूरत पड़े तो अपना डिजिट आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. पीरियोडिसिटी कितना है बेटा? 1. तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. कितना मिलेगा? 10x इज इक्वल टू 9.9 है ना. तो एक और बिठा लो भाई, 2 है यहां पे, 2. बाकी आप लोग करो. क्या करना था इसके बाद? 2 - 1. तो कितना मिलेगा हमें? 9x इज इक्वल टू 9. मजेदार आ रहा है ये. x इक्वल टू क्या हो गया? 9x इक्वल टू 9. x की वैल्यू कितनी आई हमारी इसमें? 1. 9/9 और 0.999999 लेके जा रहा है, which this is approximately equal to 1, not exactly 1, almost approximately equal to 1. Okay, now you all do a problem. Don't see the book, all textbooks closed, okay, because then only we will get our confidence of doing problems. All textbooks closed. Can we do for 0.57 in the form of P by Q? Just answer me 2 questions. 0.57 bar. What is the periodicity? You will multiply with 100 and you will adjust. What happened beta on your lip? This here, black. You put some fountain pen ink or something. There's a black big mark on your lip. And no point in now putting your lip inside and biting it. Ritisha, did you understand? Can you do this problem? Done. Did you understand? Yes. Can you do this problem? Are you done? No. Anyone online who have not understood, please don't hesitate. Let x equal to 0.57 bar, which is equal to 0.57, and I have written another 57 dot 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 dot. Meri marzi. And I multiply this with how much? 100. So this becomes 100x is equal to 57.57. So what I do? I can add another 257 dot 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 and make it 2. Make it 1. 2 minus 1. Yo, how much is it? 99x is equal to 57. X is equal to 57 by 99. 57 is a prime number. No. 57 is divisible by 3. जाएगा ये. 7 + 5 12 होता है ना. 3 से डिवाइड होगा. करो आगे. 3 19 is 57 and this 33. आगे अब हो गया. भव्य ये समझ में आया? 57 क्यों जाएगा? 7 + 5 कितना होता है? 12. 12 is divisible by 3. अगर आपको वहां भी शक है तो 12 को भी ऐड करो. 1 + 2 कितना होता है? 3. तो divisible by 3. डन. एक ले ले. ऐसा प्रॉब्लम ये करते वक्त बहुत बच्चे हॉस्पिटल चले गए थे. एम्बुलेंस आ गई थी. आपके लिए क्या होता है देखते हैं. किताब कोई नहीं खोलेगा. जिसने किताब खोला वो है कमजोर बच्चा. चलो आज अभी तुम इसमें राजा बन के जाओगे. व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
1000. Electricity is free. हाँ, very good. Digital delay. Hey, you do the problem. You're only surfing computer as far as I can make out from your body posture. You're tracking IPL score, right? Parallelly. No, touch your heart and say, tell me the truth. Touch your heart and tell me. The IPL score. No, but the way you were gazing at your monitor, based on my so many years of experience, tells me that there is a separate window which is open. Touch your heart and say no. No, touch your heart and say no. I am just asking, was the other window open or not? Yes or no, Vakul. That's it. Bus. That means my eyesight is still not bad. I can make from your facial expression whether another window is open or not. I know that because unfortunately you're wearing spectacles. Whenever you minimize a window, your spectacles show a shine. Jaideep Das is crook of the highest order, my dear boy. So he gets to know whether your another window is open or not. Again, you're saying IPL. Did I say IPL? I'm saying was another window. Who is in the kitchen? I am not eating bananas. I just asked who is in the kitchen. I'm not eating bananas. मैंने पूछा क्या? Wax, come on, do the problem. कैसे करेंगे इसको? छोटे छोटे स्टेप्स में लिख लेते हैं. Let x equal to 0.001 bar, which is equal to 0.001, and I'm adding one more series just for my mental peace and happiness. 1000 times of x should be equal to how much, beta? 1000 means the 1 goes here, 0.001, and since I have added one more, so I have added one more. Agreed? अच्छा, यहां लेकिन आपकी मर्जी, आप नहीं याद करते तो आपको कम में भी हो जाता, ताकि कंप्यूटेशन इजी रहे. देन वी डू 2 - 1. करो बच्चा, 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा? 999. x इज इक्वल टू 1. बाकी सब कट जाएंगे ना, 0 नहीं होगा, 1 है ना, तो x की वैल्यू कितनी निकली? 1/999. एनी एम्बुलेंस रिक्वायर्ड? अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम दूंगा ना, इसमें एम्बुलेंस आ ही गया था. कोई किताब नहीं खोलेगा. 2.4178 bar is on 178. Bar is on 178. What is the periodicity? मेरा चश्मा भी पहन ले. कितना है पीरियोडिसिटी? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000. लेकिन यहां रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, देखते रहो इस प्रॉब्लम में. धीरे धीरे करें. x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 2.4178. बार इज ऑन 178, यानी कि 2.4178. अभी ज्यादा लिखता नहीं हूं, ठीक है? अभी इतना ही पे छोड़ देता हूं. देखेंगे, एडजस्ट करके देखेंगे क्या होता है. डॉट 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 मल्टीप्लाइंग बाय 1000 टाइम्स x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2417.8 होगा. समझ में आया? ठीक है. हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. अभी सजाइए इसको. 8 आ गया ना. इस 8 के बाद क्या है बेटा? वंस अगेन व्हाट डू यू हैव? 4178. तो इस 8 के बाद भी 4178. तो ये 4178 हो गया हमारा. सॉरी 178. आई एम सॉरी. 8 के बाद कितना है? 178. तो यहां भी हमने क्या किया? 8178 कर दो. बस अब मिला लो इसको. अब इसका अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू डू इट लाइक दिस. 1000x माइनस हाउ मच? x. और इसमें कितना है? once you do 1000x, how much are you getting? 2417.8. after that, what is the repetition? 178. agreed? and what will we subtract? 0.4178. इतना रखने से ही काफी है. नहीं, आ रहा हूं. तो इसको यहां से काट दीजिए. आई एम सेइंग हाउ टू
मेक द लाइफ इजी ऑफ यू, और यहाँ पे 2 डालिए। अब देखो बैलेंसिंग हो गया है। ये ट्रिक समझ में आया? जब तक ये हो जाएगा आपको शांति लगेगा। अभी आप इसको कीजिए। सो हाउ मच इज द डिफरेंस? 8 and 8 minus 4 is how much? 4। और यहां से कितना हुआ? 2415। and this is how much? 999x। अब क्या करेंगे? आपको p by q में देना है, where p and q are integers। one minute, we have to represent it finally in what format? P by q, where p and q are integers। right now if you do it, then this is not integer, simple 10 से multiply कर दो दोनों साइड। what? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, करा हुआ नहीं, एक्सप्लेन करना सीखिए किसी को। यहां पे इज दिस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? रुक जाओ यार, तुम लोग रेस में चले जाते हो, तो सब 3 इडियट हो। फरहान नाइट्रेट एंड प्री रेजुलाइजेशन ढूंढते रहो किताब में। ये डेसिमल और ये डेसिमल में फर्क क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट? दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। in every problem, why did you do this step? You did this step to bring it to a terminating decimal. In the previous problem also there were terminating decimals. Sir, there were no terminating decimals. There were. 57 is a terminating decimal because your number ended as 57.0. Your number ended as 9.0. You bring everything to a terminating decimal. यही तो trick है. This is a terminating decimal. But I want this as integer. 10 डेयरी मिल्क खिला दो इसको, तो इसका भाई चिल्लाएगा मम्मा मेरे को नहीं दिया, इसको भी 10 खिला दो। चलो 9990x is equal to 24154। if you don't simplify, nobody will take away your marks, but if you don't show this, that multiplying both sides by 10, I will take away your marks. I am not interested in simplification. I'm not testing your simplification skill. I will check whether you have understood the chronology. So what did we learn in this type of problem? We will be given a rational number in a format which will be non-terminating repeating. Our job will be somehow convert it into a terminating decimal. And thereafter, if it is a whole number, job is very easy. This was the first time we encountered a non-whole number. Then some dairy milk. अगर यहां पे 2 नंबर्स रहते तो 100 से मल्टीप्लाई करते। आ गया था इस बार हॉस्पिटल एम्बुलेंस। चलो एक और एम्बुलेंस देखते हैं ये बच्चा कर पाता है कि नहीं। हाँ बोलो सर। कौन से वाले प्रॉब्लम? हाँ बोलो। वहाँ पे जो 10,000x करके नहीं करते हैं। आपको नहीं पता, हमेशा मल्टीप्लाई करोगे पीरियोडिसिटी के ऊपर, और वैसे करने से टर्मिनेट करेगा ही करेगा। लास्ट में यहां पे हम कुछ एडजस्टमेंट खेल सकते हैं। इसमें आप 10,000 नहीं करते हैं। द प्रोसीजर इज यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी। उसके बाद यहां पे होल नंबर आ सकता है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। टर्मिनेटिंग आया तो थोड़ा सा डेरी मिल्क खेल लेंगे। सो आर.एस. अग्रवाल में अभी जो एक्सरसाइज है ना, दैट एक्सरसाइज 1B ऑफ आर.एस. अग्रवाल यू कैन डू एज योर होमवर्क। Exercise 1B of R.S. Agarwal you can do as your homework. This has all these problems only. R.S. Agarwal 1B. Express as a rational number. ठीक है? अच्छा, there is another type of a problem. उसमें कुछ नहीं है. We just have to show our skills. Okay. Was that problem gone? Before we get into irrational, hang on, children. I'm just looking for one more problem. Okay, I think that is in NCERT. Okay, let's see that. ये भी कभी-कभी आपको पूछ देता है. So, any more doubt with P by Q formats? No doubt with P by Q format. Okay. Now, as we start
Our rational numbers and all are over from now. Now our journey starts with irrational numbers. So let's look at irrational numbers, and from here please pay more attention because everything will be new. What are irrational numbers? Irrational numbers, the best way is that they are the root of non-perfect squares. Non-perfect squares. This is one way of understanding them. Non-perfect squares root. Say for example, it can be root 3, root 2, root 5. These are all irrational numbers. Irrational numbers will also have a non-terminating, non-repeating decimal. So the other day, Ananya had asked, are irrational numbers there on the number line? 100%. Last class में हमने ये सब plot किया था, तो ये तो number line में है. So our number line consists of what? Rational and irrational numbers. Have you understood? So one question they might ask you, they might give you a number which is 1/7. Is it a rational number? Hey, I want all of your response. Is it a rational number? क्यों? Doubt क्यों है इसको rational number बोलने में? It's a rational number. Is this a rational number? Yes. हमें कहता है इन दोनों नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढिए. बहुत ही आसान है. We are asked that in between these two numbers, try to find one irrational numbers. There will be infinite irrational numbers, but they have asked us that find one irrational number. How to find this? Okay. Tell me, 1/7 today we have done. How much is 1/7? 142857, and then there is a bar. Do you agree? Okay. What is 2/7 then? Can anyone multiply this? 2 into 7 is how much? 14, 4, 1 carry over, 2, 5, 10, 1, 11, 1 carry over, 2, 8, 16, 1, 17, 1 carry over, 2, 2, 4 and 1, 5, 2, 4s are 8, 2, 1s are 2, and 2 zeros are 0. So this is 2/7. These two are rational numbers, right? We are supposed to find what? One irrational number. Irrational number कौन होता है? Non-terminating, non-repeating. Non-terminating, non-repeating. What happened? Any query? Non-terminating, non-repeating. Very easy. ये कितना नंबर है? 0.14. ये कितना है? 0.28. जरा सोच के देखो. 0.14. Let's see. Let's look at the number line. This number is standing where? 0.14 something is standing. This number is standing where? 0.28 something. इसका मतलब 0.15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22 कुछ भी. मुझे बोला इसके बीच में आप एक क्या दाके दे दो? इरेशनल नंबर. कुछ करने का जरूरत नहीं है. मेरा मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया. 0.162893104869132180 ... ऐसा भी तो कोई नंबर है. हो गया. मेरी मर्जी. ये भी तो इरेशनल नंबर है. क्या इसमें कोई रिपीटिंग है? नहीं है. क्या ये टर्मिनेट करता है? ये इरेशनल नंबर है. और इसकी वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0.16. क्या 0.16, 0.14 और 0.28 के बीच में है? सर मेरे को भी आपके तरह बनना है, तो बन जाओ. 0.2134692167836944 हो गया इरेशनल नंबर. डू यू गेट द ट्रिक नाउ? कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. इरेशनल. तुम्हें अगर कोई बोला फाइंड टू, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर. सर 0.13286419231849849687. बस रिपीट मत करना कोई पैटर्न. आसान भाषा में बोलते किताबें सर. वही 3 रेट की तरह. Records organized, summarized with table of contents, this, that, this. Now do you understand irrational numbers कितने easy होते हैं? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड. अभी इजी लगा है. तुम जो पूछ रहे थे 0.66 प्रॉब्लम हो रहा था स्कूल में, अब इजी हुआ. तो आज आपने क्या सीखा? इफ अ नंबर इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो आपको क्या करना चाहिए उसमें?
पीरियोडिसिटी देख के मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए और फिर बड़े से छोटे को माइनस कीजिए। होल नंबर आ गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं आया तो थोड़े डेयरी मिल्क बांट दीजिए दोनों साइड में, आपका होल नंबर आ ही जाएगा। और अगर आपको बोला कि दो नंबरों के बीच में निकालिए, हो गया। 1/3 और 2/3 के बीच में निकालते हैं, आ जाओ। 1/3, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.33 मीन्स इट इज 0.3 बार। अग्रीड? 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 बार। इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढने बोला, 0.4 बार बोल रहे हो आप। अच्छा, मैं लेकिन थोड़ा और चेंज हो रहा हूं। ये नंबर कितना है? 0.33। मेरा इरेशनल नंबर आप सोच रहे हो खाली बार बार 0.4, इसके बाद क्या है? 0.5, उसके बाद 0.6 आ रहा है ना। मैं ये भी तो बोल सकता हूं द नेक्स्ट इरेशनल नंबर इज 0.3421849630118341। इससे थोड़ा बड़ा होना है बस, और इससे छोटा होना है। सैकड़ों नंबर आएंगे। Did you understand the trick? And if you just go one below it, 0.59362488, 0.591364. So it is like elastic. जितना खींचते जाओगे उतना दिखते जाएगा। चलें आगे। And now we come to the main part of the chapter, slowly and slowly. जहां से आपकी खुशी छीन ली जाएगी। चलो, अब कुछ फाइंडिंग्स, ये आपको ग्रेड 10 में आएंगे, लेकिन फाइंडिंग्स ग्रेड 9 में ही है। फाइंडिंग्स, ठीक है। इरेशनल प्लस इरेशनल हमें क्या देता है? 1 मिनट, डोंट इमीडिएटली मग इट अप, इट्स वेरी इजी। इरेशनल प्लस इरेशनल, डू यू अंडरस्टैंड? वायरस प्लस वायरस, आइदर इट कैन बी खतरनाक वायरस और one virus may be opposite of the other virus and you may get a healthy person also. देखो, we took a irrational number as √2 and we took another irrational number √3. इन दोनों को हम ऐड ही नहीं कर पाते हैं। इनका एडिशन क्या होगा? We have to just leave it at √2 plus √3. This number is irrational. Means virus gave me super virus. Are you understanding? वहीं अगर मैं √2 के साथ ऐड करने की कोशिश करूं नेगेटिव √2 को, √2 के साथ किसको ऐड कर रहा हूं? नेगेटिव √2. नेगेटिव √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, राइट? रियल नंबर नंबर लाइन में इस साइड में है। अब वैल्यू कितना हो गया? व्हाट इज द वैल्यू नाउ? इतना धीरे क्यों बोलते हो? चोरी किए हो क्या? 0. इज 0 a rational number? Yes, this is a rational number. Virus, antivirus, इंसान पैदा हो गया। Therefore, irrational plus rational can give me either irrational or rational. We can't straight away say कि ये irrational ही देगा। ये चीज समझ में आया? 3√2 plus 2√2. How much? 5√2. This is an irrational number. Okay. So have you understood this one? ये सब true or false पूछ लेगा, आपको आना चाहिए। Grade 10 you will be using these findings. Let's see the next one. Irrational into irrational. हमेशा याद रखना, जब जब वायरस और वायरस एक साथ आता है ना, लफड़ा हो जाता है। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, एक और कर लेते हैं। Irrational प्लस रैशनल, ये नहीं किया ना? अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? वायरस नॉट एंटीवायरस, इंसान। रैशनल हमेशा इंसान है। वायरस और इंसान रहने से इंसान स्वस्थ रह सकता है, वायरस लगेगा ही उसको। ये इरेशनल है। एग्जांपल देख लो, √2 plus 3, we have no other option to leave it as 3 plus √2. Irrational plus rational will always give me irrational. Whenever it is eerie, then there is some dadagiri. Remember that.
ईरी ईरी पे कुछ ना कुछ दादागिरी होने वाला है। देखो यहाँ ईरी ईरी हुआ ना, 2 आएंगे, यहां भी होगा। अब यहां देखो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना मिलेगा? हाँ, √4। तो √4 कितना होता है? नो, शी इज करेक्ट। √4 कितना होता है? 2 ना। सो इज 2 a irrational number? Yes sir, 2 is a irrational. So irrational into irrational gave you what? Rational. Hold on. √2 multiplied by √3, this gives you how much? √6. This is what number? Why is it irrational? It is square root of a non-perfect square. Straight away, very good. It's an irrational number. Therefore, irrational can also give me irrational. Have you understood? In exam, will you forget? Even if you forget, you can generate your own thing. Okay. इतना समझ में आया? अब एक और चीज, let us see operations on irrational numbers. Sorry, operations on irrational numbers. What are the operations we do? Plus, minus, multiply, divide. Operations on irrational numbers. यहां से इंपॉर्टेंट हो गया आपका चैप्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रादर। आ जाओ। I hope all of you know that √2 means what? Square root of 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2th root of 2. I hope you understand this. √2 means 2th root of 2. We don't write this 2. How do you write? Cube root ऐसे लिखते हैं ना। तो √2 का मतलब क्या हो गया है? और इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 to the power half. ये सब पता है तो? These are grade 8 stuff. Okay, operation. If you get 2 irrational numbers and these are all known as surds, hence on we will do everything with surd. What is a surd? A surd is the root of a non-perfect square which is also irrational number, and in some books this will be also written as radicals. आप ये टर्म्स भी सुन के रखिए, रेडिकल्स या सर्ड बोलते हैं। अब से हम जब भी इरेशनल नंबर के प्रॉब्लम करेंगे, हमें कोई तो इरेशनल नंबर चाहिए, तो सृष्टि बोलेगी सर वो वाले नंबर लो ना, 0.3621843996। हम बोलेंगे कितना दूर तक लिखेंगे? तो छोटा सा एक होना चाहिए। दैट छोटा वाला रूप इज दिस इज द इजीएस्ट वे टू वर्क विद इरेशनल नंबर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सर्ड्स या फिर रेडिकल। इनकी में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसा रहता है? If you get a surd which is multiplying another surd, then you can straight away put your root like this and you multiply what? 2 and 3 together. What do you get? √6. सुपर डुपर इडियट का काम कर रहे हैं आप लोग। ये कौन सा बड़ा बात है? ये तो आप ग्रेड 8 में कर चुके हैं। ये क्या हो गया? 2 to the power half. ये क्या हो गया? 3 to the power half. x to the power m into y to the power m. ये पढ़ा नहीं था? xy to the power m, वही तो आप कर रहे हो। 2 into 3 to the power half. कौन सा नया चीज सीखा आपने? 6 to the power half which is root of 6. कौन सी नई चीज सीखी हमने? वही चीज तो आ रहा है। समझ में आया? और वहीं अगर ये हो जाता था √2 into √2, तो भाविया मैडम की तरह हम बोलेंगे √2 into 2, जो कि हो गया √4। बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 2 ये बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो डिवीजन भी आप कर पाएंगे। डिवीजन इज जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपोनेंट्स। ओके, इफ समबडी टेल्स यू व्हाट इज √6 डिवाइडेड बाय √2, सो यू कैन राइट दिस एज √6/2 which is equal to root of 3. √2 into √3 gives me √6. क्लियर? अब जरा देखते हैं एडिशन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशंस चले, आइए। घड़ी मत देखिए, कल सैटरडे है, ऐसे भी तुम लोग 10 बजे तक सोए रहोगे कुंभकर्ण की तरह। √2 एडेड विथ √3, सर ये रोड क्लोज्ड है। व्हाट इज इट? रोड क्लोज्ड, कुछ नहीं कर सकते। Additions can only happen शैतान with शैतान,
अच्छा विथ अच्छा, बंदर विथ बंदर, सुंदर विथ सुंदर। यानी कि अगर √2 के साथ कोई मुझे कहता 3√2, देखो तो ये भी बंदर ये भी बंदर, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। इस √2 के सामने एक 1 खड़ा हुआ है, 1 मैंगो प्लस 3 मैंगो, हाउ मेनी मैंगोस? 4 मैंगोस, 4√2। समझ में आया? इसको नहीं कर सकते। √2 माइनस 5√2 कितना हो जाएगा? -4√2। हमेशा ये चीज और ये चीज सेम होना पड़ेगा, तभी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इफ दे आर नॉट सेम, देन व्हाट डू वी डू? रोड क्लोज। You just, so the question was, sir, what is the answer of this? Nothing. Sir, we don't like the way you do. Okay, do your way. Addition is commutative, whatever you want. Answer is this. लेकिन अब क्या होगा? अब आएगा हिंदी मूवी। प्यार जाति धर्म नहीं समझता है, प्यार अंधा होता है, एक रैशनल प्यार कर बैठेगा एक इरेशनल से। आया? समझ में आया? इसका अभी एडिशन होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? ये एडिशन होने वाला है। अब इसमें देखो तो, इंसान इंसान, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली ऐड हो सकता है? नहीं। इंसान इंसान ऐड हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? 4 + √3 + √5। समझ में आया? अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। 2 + √3 प्लस -1 प्लस 5√3। जरा देखो तो, इंसान इंसान, कुत्ता महाकुत्ता कर सकते हैं, बिल्ली नहीं है वो। 2 और -1 कितना हो गया? 1। √3 और 5√3 कितना हो गया? 6√3। भाई साहब, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। कुत्ते बिल्ली की कहानी बहुत हो रही है ना मैडम? आर यू ओके? Hey Vakul, why do you keep on moving? Leg is paining, hand is paining. Aditi, have you understood? Kartika, are you okay or not? Yes, sir. Harshit, I know your heart is calling for IPL. But when your heart calls for IPL, I become super BPL, below poverty line. और आधा घंटा मैच करते हैं आज। आज सर का मूड बहुत अच्छा है ना? बार बार चखोगे, कहोगे मजा नहीं आया थोड़ा सा। The weather is so nice, it's so breezy. Ritisha, the drawing is over? अच्छा, the sketch that you were making? Not yet? Okay, now make that sketch. Complete it. Art is a form of expression of feelings. Nothing wrong. She draws nice. बोर हो जाती है तो क्या करेगी, वो बीच बीच में ड्रॉ करते रहती है। कोई बात नहीं। ये समझ में आया? एक प्रॉब्लम कर दो फिर छोड़ता हूं। 4√2 मल्टीप्लाइड बाई -3√7। ये करके दिखा दो मुझे। मुंह से करो, मुंह से। पेन क्यों चाहिए इसको करने के लिए? कितना होगा? -12 √14। बहुत अच्छा। अगला प्रॉब्लम, 4√2 मल्टीप्लाइड बाई -3√6। इसको करो तो -12 यही हो गया थोड़ा सा लफड़ा। √12 बोले तो कितना है बेटा? √4 × √3। √4 का आप रूट कर सकते हो, विच इज 2 और 3, यानी कि ये हो गया -24√3। जितना खून चूस सकते हैं वैम्पायर की तरह, ड्रैकुला बन जाओ। लेकिन याद रहे, 4 जब बाहर आएगा 2 होके आएगा। भाभी, ये समझ में आया? अगर यहां 64 रहता तो कितना आता बाहर? 8। अगर 169 रहता तो 13 बाहर आता, 225 रहता तो 15 बाहर आता। याद रखिएगा, चूसते वक्त उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम करके आएगा। समझ में आया? अगले क्लास से सर्च के प्रॉब्लम शुरू। सो इफ यू आर फॉलोइंग द बुक कॉल्ड NCERT, which means NCERT, then you should be done with exercise 1.3 तक। सारे कचरे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कर डालिएगा।
एंड दिस 1.4 जो है ना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये कोई एग्जाम में नहीं आता है, उसको छोड़ दो. एंड फर्दर यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू कंप्लीट ये जो है, आई डोंट नो 1.4 मीन्स इन माई बुक इज एन ओल्ड बुक, देयर आर सम सर्ड्स के एडिशन सब्ट्रैक्शंस हैं. Thus problems like add 2 root 2. After that we have finding square root of any number and rationalizing. So in our next class we will go for our last exercise, and in RS Agarwal what you can do, children, please open your RS Agarwal, don't you forget it bachcha log. Take down exercise 1D, D standing for delta, D standing for delta. 1D, that's page number 27. Okay, so question number 1, please do, you can do all, but please do part number 2 and 3. Part number 2 and 3. Question number 2, please do part number 2 and 6. You should do all actually. Do all. No, 1 and 2 nahi, all. You are in grade 9, my dear. ऑल. तभी ना आप सीखेंगे. और पिछले वाले एक्सरसाइज भी कीजिएगा जहां पे हमने फाइंड दिस. अगर अच्छा रिजल्ट कर, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन